Business Morning is brought to you by BSE IPF. Hello and welcome to Business Morning and happy Raksha Bandhan to all our viewers. Well, I am Arun Sharma and in next 1 hour we'll get you updates from stock markets as to how you should make your portfolio in these kind of range-bound sessions, and also IPO of RBL Bank opens tomorrow. So what should be your strategy as far as this IPO is concerned? And also today in our special segment, that is Economy Today, we shall also be discussing about Startup India initiative. And for more on this, I'm also joined with my colleague Ajay Mishra. शुक्रिया अरुण। और जिस तरह से अरुण ने कहा कि आज हम चर्चा करेंगे स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की। अगर आपका कोई भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है तो आप हमें भेज सकते हैं। हैशटैग इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए, @DD News Live हैंडल पे अपना सवाल भेजिए। स्टार्टअप से जुड़ा आज आपका सवाल होना चाहिए। अगर आप इस प्रोग्राम के अगले हिस्से का अगला जो हिस्सा है उसमें हिस्सेदारी करना चाहते हैं अपने सवाल के जरिए, लेकिन हमेशा की तरह क्या कुछ चल रहा है एशियाई बाज़ारों में उस पर निगाह डाल लेते हैं, उसके बाद भारतीय बाज़ारों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और एशियाई बाज़ार में इस वक्त मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। निके 80 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ शुरुआती कारोबार में दिखाई दिया। स्ट्रेट टाइम्स में भी दबाव बना रहा। हैंगशैंग में लेकिन ज़बरदस्त आज बढ़त देखी गई, 1 से 1.25% की बढ़त अब से थोड़ी देर पहले देखी गई थी। और सिंगापुर एक्सचेंज पर निफ्टी करीब 22 अंक ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। एक ऐसा संकेत कि शायद भारतीय बाज़ार भी बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। And let's also now take a look as to how the US markets closed yesterday. So pressure. So U.S. markets basically trading in green, specifically after the U.S. Fed minutes. The U.S. markets rebounded from the lower levels, and Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, all these three indices down up by 0.12 to 0.03%. So marginal buying activity taking place in the last hour of the trading session. Dow Jones, S&P 500, and Nasdaq, all these three indices in the green. And to talk more on that stock market perspective, we are joined by Mr. K.K. Mittal to give us an idea as to what exactly should be your strategy as far as the stock markets are concerned. Mr. Mittal, welcome to Business Morning. Good morning. First of all, now after the Fed minutes, how do you read the stock markets going forward, maybe till the end of this calendar year? Where do you see the stock markets going, and is this the right time to make portfolio in these range-bound sessions? I feel yes, whenever there are opportunities that markets are gone down, so one should be instead of fearful exit, should be looking into investing into the stock market. It is an opportune time to invest whenever the markets are coming down. For the time being, markets are in a particular range. They are trading in a range, consolidating, looking and searching for cues for either going up or going down. Yesterday, Fed minutes were public, and accordingly, the job market is good, but they have a diverse opinion on increasing the interest rate. So there is no consensus. The moot point is that whenever there would be inflationary expectation or inflation touching or crossing 2%, they can take action. But for the time being, there is hardly any indication in the Fed minutes for increasing rates. And yesterday, after publishing the Fed minutes, the market bounced back. In fact, before that, it was trading into negative. So marginally, it went up. And today, as we see Asian markets and pre-opening indication of Indian markets, the expectations are that market is going to remain in a particular range. Yesterday, if we take a look on the FI's numbers, they purchased marginally, maybe 5 crores. And DIs, though they were selling, but their selling came down substantially. It was a few crores, 60 crores and all.
So not much activity in the market. Market is definitely looking for cues, consolidation. US elections are there, which is going to be an important market. Will definitely going to watch how it is progressing. तो मित्तल साहब, जब बाज़ार में ख़बरें नहीं होती हैं जिसकी वजह से मार्केट उतरता या चढ़ता है, तब तो शायद आपको फंडामेंटल्स पे वापस आना पड़ता है और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसके लिहाज से एस्टिमेशंस करने पड़ते हैं, आकलन करना पड़ता है, उसके बाद पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। तो शायद एक अगर आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के आधार पर पोर्टफोलियो बनाना है तो ये सही वक्त है, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको प्रभावित करेंगी बाज़ार में और उससे प्रभावित होकर के आप कोई डिसीजंस लेंगे। क्या कहेंगे अगर कोई शुरुआत करना चाह रहा है? देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस बार सामने आई कि जिन कंपनीज़ के नतीजे अच्छे थे उनमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट बाइंग भी देखने को मिली, और जिन कंपनियों के नतीजे ख़राब थे उसमें हमने देखा कि काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग या एक्टिविटी काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिली और उनके रेट्स भी नीचे की तरफ आए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मार्केट इज़ नाउ एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड क्वार्टरली अर्निंग्स एंड देयर अर्निंग ग्रोथ्स। उसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, तो फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। मॉनसून अच्छे रहे, अबव एवरेज, सोइंग सीज़न बहुत अच्छा रहा। हमने देखा कि जिनकी वजह से फूड इन्फ्लेशन या पल्सेस की वजह से जो इन्फ्लेशन था वो इम्पैक्ट कर रहा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वहाँ भी हमने देखा कि 40% की सोइंग में बढ़ोतरी इस बार देखने को मिली। जो नतीजे थे कॉर्पोरेट वो मिले जुले थे जी, और उसके अनुसार ही स्टॉक का मूवमेंट भी रहा, मार्केट का मूवमेंट भी रहा। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो बहरहाल यस, अपॉर्चुन टाइम है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में एक 5% या 10% का करेक्शन आ सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो मार्केट है वो 8,600 से 8,650 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इस ट्रेंड से जैसे ही बाहर निकलता है तो मैं समझता हूँ कि एक क्यूज मिलता है अपसाइड और डाउन साइड का। तो वो अगर डाउन साइड आता है तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुन टाइम है चुनिंदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो जस्ट स्टे ऑन योर होल्डिंग। All right, so on that note, let's also take a look as to how the pre-opening indicators are indicating. Well, Sensex is up by 72 points at 28,077 levels. And clear-cut, it seemed that SGX Nifty was reflecting that markets might open marginally negative. However, contradicting it, Sensex is up by 72 points to trade at 28,077 levels. Well, on that note, we'll take a short commercial break, but lots more on the other side. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूँ सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं बिजनेस मॉर्निंग, और अब शेयर बाज़ार पर किस तरह से बाज़ार खुले हैं उस पर
आने से पहले आज की जो बड़ी आर्थिक खबरें हैं उन पर निगाह डाल लेते हैं। देखते हैं टॉप लाइन्स। ऊर्जा क्षेत्र के ट्रांसमिशन सेक्टर में पारदर्शिता के लिए मंत्रालय ने की नई वेबसाइट तरंग की शुरुआत। निवेशकों का भरोसा बढ़ने और ग्राहकों को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर हो रहे काम की भी हो सकेगी समीक्षा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने ऑनलाइन बिजली खरीदने के प्लेटफॉर्म ई ट्रांस और दीप की भी शुरुआत की। देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी अब रिन्यूएबल्स पर करेगी फोकस। अगले 10 सालों में इस सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने का टारगेट। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना। ग्रीन इंडिया मिशन में रेलवे ट्रैक के किनारे होगा वृक्षारोपण। पंजाब और हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रेलवे ने किया समझौता। 5 लाख पेड़ लगाने का प्रस्ताव। रेलवे ट्रैक के किनारे हो रहे अवैध कब्जे से भी मिलेगी निजात। देश में अफोर्डेबल सेगमेंट में घरों की सप्लाई में 100% की बढ़ोतरी। जनवरी से जून के बीच में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में 17,000 नए यूनिट्स की हुई शुरुआत। कुशमैन वैकफील्ड की रिपोर्ट का खुलासा। मथुरा में इंडियन ऑयल द्वारा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जरूरी पानी के लिए वृंदावन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की होगी शुरुआत। 40 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा ये ट्रीटमेंट प्लांट। इस मौके पर मथुरा में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला योजना के तहत 300 महिलाओं को सौंपा रसोई गैस का सिलेंडर। और आंगनवाड़ी में काम करने वालों और आशा वर्कर्स के साथ साथ मिड डे मील स्टाफ को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने की योजना। वित्त मंत्री के साथ भारतीय मजदूर संघ की बैठक में हुई चर्चा। पीएफ और मेडिकल सुविधा मिलने की उम्मीद। Well, so these were the top lines of the big stories of the day. Well, on that note, the markets have opened. Sensex is up by 127 points to trade at around 28,132. Well, Nifty is also reflecting the same kind of momentum, is up by 33 points at 8,657 levels, so up by almost 33 points there. Talking about the gainers and losers over there, now top gainers, Bharati Airtel on Nifty is leading the charts. Power Grid on BSE Top 30 up by 2%. Dr. Reddy's, Adani Ports, ICICI Bank up by 1%, and Axis Bank up by 1%. Now let's also take a look as to which stocks are dragging the markets down. Well, talking about the top losers on the charts, Wipro down by 1%, Larsen & Toubro, Coal India, Bajaj Auto and GAIL. All these indices are down by 0.25 to 0.5%. Well, Mr. Mittal, well, the stock markets remains in a passive mood as of now, but there is one segment, that is the IPO market, which seems to be buzzing. Now, talking about the last 10 IPOs, barring L&T Info, all these the IPOs have given good result or the decent results. Tomorrow, the RBL or the Ratnagar Bank Limited Bank opens or comes up with its IPO. What's your coverage as far as RBL Bank is concerned? See, RBL Bank is mid-segment bank. They are providing working capital loans largely and retail loans, in fact. They have bought retail business of RBS. The management is quite experienced. The price range is okay. So I think one should be subscribing to the RBL IPO. So that is my recommendation. But as far as the other IPOs, apart from L&T Infotech, mostly IPOs were in the niche business, and they have tested the market, businesses I am talking about, for the first time, like they were in the either microfinance segment or medical prescription, like investigations and all. So these IPOs, good opportunities were there, and the response was pretty good. And even the performance in the market till today
most of them are above their opening prices and their IPO prices in fact. So the response of IPO and returns of investing into IPO is pretty good. So I feel that is the response in this IPO is also going to be pretty good. बैंकिंग सेक्टर आज लीड कर रहा है और उसमें भी पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो 1% से ज़्यादा इंडेक्स निफ्टी पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पीएनबी करीब 1.5% ऊपर, इलाहाबाद बैंक ही 1.25% ऊपर, सिंडिकेट बैंक और एसबीआई में भी खरीदारी देखी जा रही है। तो अगर कोई भी तेज़ी, जैसे आज तो तेज़ी कहेंगे 130 अंक अगर ऊपर सेंसेक्स वापस भाग रहा है, तो फिर से क्या पीएसयू बैंक से ही लीड करते हुए नजर आएंगे बैंकिंग और जो एक तरह से ऑटो जैसे सेक्टर्स हैं? देखिए कल भी बैंक निफ्टी ऊपर था, आज भी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एसबीआई के नतीजे आए उससे एक दोबारा से जो पीएसयू बैंक्स को लेकर रीएश्योरेंस मार्केट में बना, कुछ कॉन्फिडेंस दिखाई दिया और काफ़ी पीएसयू बैंक्स में खरीदारी देखी गई। अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी खरीदारी देखने को आने वाले समय में। लेकिन अगर आप एसबीआई की बात कर रहे हैं तो एसबीआई की सब्सिडीज़ का जो विलय होना है वो मार्च तक पूरा होना है और उसको लेकर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद अभी थोड़ा कॉशियस, मतलब वेट करना चाहिए इस स्टॉक में, अगर या फिर जो दूसरे सब्सिडी के स्टॉक्स हैं उसमें। तो क्या ऐसी कोई रणनीति है या फिर अभी भी एसबीआई में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस मैं समझता हूँ, मेरा मानना यह है कि एसबीआई विलय के बाद एक काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंक बन जाएगा जी, और ये अभी अपॉर्चुन टाइम है विलय से पहले कि इसमें निवेश करके लंबी लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करें तो बेहतर प्रोपोजिशन सामने होगा। जो ट्रेडिंग कॉल लेना चाहते हैं वो मार्केट फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स देखने के बाद ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बाइंग का सवाल है, मैं समझता हूँ ये अच्छा अपॉर्चुन टाइम है एसबीआई में निवेश करने से। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो स्टॉक्स बढ़े हुए थे जैसे कोल इंडिया, बजाज ऑटो, गेल, उनमें आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को। ट्रेडर्स मार्केट जिसे आप टिपिकली कहते हैं, ट्रेडर्स मार्केट टिपिकली। ये खबर हमने देखी एनटीपीसी को लेकर के कि वो रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है। लेकिन इस तरह की खबरें हम पहले भी देख चुके हैं। हमेशा जब भी मैनेजमेंट से कोई बात करता है तो वो 10 ईयर 5 ईयर का प्लान, कैपेसिटी एडिशन कितना करना है, कहाँ पर कितना फोकस करना है, कितना प्रोडक्शन अप करना है, इस तरह के टारगेट्स आते रहते हैं। तो रिन्यूएबल्स पे फोकस जो शायद बढ़ने जा रहा है और शायद सोलर में लेकर के कंपनी काफ़ी कुछ कर भी रही है। तो क्या अभी एनटीपीसी में जो अभी रिटर्न के नाम पे तो बहुत ज़्यादा कंपनी ने दिया नहीं लोगों को, लेकिन क्या अब स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इनकी अनवील होगी आने वाले समय प्लान, उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट होता है उसका बेनिफिट कल या परसों या 3 दिन बाद नहीं मिलने वाला। डेफिनेटली इसमें 2 साल 3 साल लग सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर विकल्प है पावर ग्रिड। मैं समझता हूँ कि इस करंट क्वार्टर में कुछ एडिशनल कैपेसिटीज़ वगैरह मोनोपोली है उनकी ट्रांसमिशन के, तो वो कंप्लीट होगी तो उससे हालांकि रिजल्ट्स अच्छे थे तो वहाँ अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। Talking about the IT sector now, apart from banking and the power sector, now specifically after the example of Infosys and the kind of tremors they're getting from the Brexit, now they might also lay off 3,000 employees over there. What's the outlook? Because IT, we have seen a dream rally in the IT sector in the last 2 to 3 years. Then, but what's the outlook going forward as far as the IT sector is concerned? And if not Infosys, then do you think any other stocks in the IT pack can be brought at these levels, or would you be avoiding the IT sector completely? See, there are some indication that Cisco is going to hire off about 14,000 employees, and this has created a negativity sentimentally into the IT sector globally, and a lot of selling was there in IT sector, but I still feel that there are a lot of opportunities as far as IT sector is concerned. And at an appropriate, though there are some slowdown or stress building up in the IT sector, but my own feeling is that there are great opportunity in IT sector is still persist, and on selective basis one can make investment into IT sector, and there are few good stocks. We may also see some consolidation and buying of businesses, inorganic growth in the IT sector as well, because whenever there are
difficult times, there are consolidation, mergers, acquisitions. So we feel that going forward there would be a lot of consolidation in the IT sector. But still I feel that there are opportunities. Like HCL have posted very good results. Infosys is another stock one can buy at an appropriate point of time. Wipro also looking good. So one can take benefit of these companies. लास्ट मिनट मिस्टर मित्तल, क्या कहेंगे आप रिटेल इन्वेस्टर्स को अब जो अभी हाशिया पे पड़े हैं और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? आपका रिकमेंडेशन एक में। मैं समझता हूँ कि एग्रोकेमिकल या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट करने की। जैसे फर्टिलाइज़र है, कोरोमेंटल इंटरनेशनल है, यूनाइटेड फॉस्फोरस UPL जिसको हम बोलते हैं, या रैलीज़ हैं, टाटा केमिकल हैं, इनमें अच्छी गुंजाइश नज़र आती है अभी भी इन्वेस्ट करने की। एस्कॉट्स है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, रूरल रिलेटेड कंपनीज़ हैं। कुछ सीमेंट कंपनीज़ हैं जैसे डालमिया भारत के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे, आज इंडिया सीमेंट के रिज़ल्ट हैं, तो वहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। Well, so on that note, we'll slip into a short commercial break, but after that, our special segment, Economy Today, whereby we'll be focusing on Startup India. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. मैं हूं सूर्यदेव, एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. Mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Welcome back to Business Morning. And 16th of January 2016, when Prime Minister Narendra Modi started the Startup India initiative in order to boost the startup culture in our country. Today we know that 65% of our India's population is below the age of 35. That means India is young India. How about not seeking a job and providing jobs to people? How about becoming an entrepreneur but blending it with some innovations? That's what we call startup. And today our focus will be on startup only, as to what can be done as far as startup is concerned. Government is providing a clear-cut ecosystem as far as startup is concerned. But if in case you have an idea to develop into a business, what are the challenges that you are facing? We'll try to sort it out. We'll try to solve it out, because we have a guest in this Business Morning or the Economic Today studio, and with me is Ajay also in this segment. और इकॉनमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता है हमारा ये नया कार्यक्रम। सीधे आपसे जुड़ते हुए आज का मुद्दा है स्टार्टअप इंडिया। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ट्विटर के जरिए सवाल कीजिए, #इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए। @DD News लाइव पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। प्रोग्राम में सवाल स्टार्टअप से जुड़ा होना चाहिए, सिर्फ आपको इतना ख्याल रखना है। जीमेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, economytoday.ddnews@gmail.com पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, जो कि महानिदेशक हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम इकॉनमी टुडे की।
नई पीढ़ी, नई तकनीक, नई सोच, नया जोश और उसके जरिए एक नई शुरुआत से देश में एक बदला हुआ माहौल बनाने की कोशिश, जिसमें युवा न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो सके बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सके। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की। क्या है खास और कैसे आसान हो सकता है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आपके पास हुनर और नई सोच है तो आपके सपनों को भी पंख लग सकते हैं। एक नया बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप इंडिया का साथ आपको भी फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल सरीखे नए उद्योगपतियों की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? केंद्र सरकार ने नए आइडिया के साथ कंपनी की शुरुआत करने वालों के लिए राह आसान कर दी है। स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया है। बस एक मोबाइल ऐप के जरिए महज एक दिन के भीतर कंपनी को दर्ज कराया जा सकता है। बिना पैन कार्ड के भी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। स्टार्टअप कंपनी को 3 साल तक टैक्स ब्रेक और जांच से मुक्त रखा गया है। इतना ही नहीं, श्रम और पर्यावरण कानूनों से भी राहत दी गई है। फंड की खास व्यवस्था बनाते हुए स्टार्टअप में 10,000 करोड़ का कोष बनाया गया है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपए हर साल खर्च किया जाएगा। कर्ज की सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की गई है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में 31 इनोवेशन सेंटर और 18 इंक्यूबेटर सेंटर लोगों के लिए तैयार है। साल 2015 में करीब 4,500 लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के साथ इसमें कदम रखा। स्टार्टअप के लिहाज से भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर है। स्टार्टअप में 2015 में करीब 32,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, यानी हर हफ्ते करीब 625 करोड़ रुपए का निवेश। देश में करीब 4400 स्टार्टअप हैं और सरकार को उम्मीद है कि 2020 तक देश में 12,000 से ज्यादा स्टार्टअप तैयार होंगे। उम्मीद है कि स्टार्टअप की बदौलत लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और ये पहल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस कार्यक्रम में आप सवाल कर सकते हैं स्टार्टअप से जुड़ा हुआ। डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सर, अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जाए, आइडिया के लेवल पे, इनोवेशन के लेवल पे, गवर्नमेंट फैसिलिटेशन के लेवल पे, क्या आपको लगता है कि इकोसिस्टम अब बिल्ड होना शुरू हो गया है? लोगों की सोच जो पहले ऐसी नहीं थी, क्या अब वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल है परिवर्तन, क्योंकि ये जो पूरी स्कीम है 3 मुख्य इसके पिलर हैं। पहला तो जो फंड की अभी बात बताई गई कि 10,000 करोड़ का एक फंड रखा गया है, 2,500 करोड़ हर वर्ष हमें खर्च करना है, तो वो एक मेजर पिलर है जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स को, जिनके पास पैसे की ज़रूरत है, जिनको, उनके लिए उससे सुविधा मिलेगी। दूसरा, इस पूरी स्कीम को अटल इनोवेशन मैकेनिज्म से जोड़ दिया गया है। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसा आपकी रिपोर्ट ने बताया कि 31 इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए, तो टेक्नोलॉजी है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो टैक्स इंसेंटिवाइजेशन है। तो कई तरह के टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जिससे कि लोग प्रेरित हों और आगे आएँ। अभी जैसा आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि 4,500 के करीब लोगों ने करा है। स्कीम 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई है और वो 31 मार्च 2019 तक है। तो इस बीच में आपको कई तरह के आयाम देखने को मिलेंगे और इन 3 पिलर्स पे ये पूरा मैकेनिज्म खड़ा हुआ है। Sachin, one more thing. I have 2 queries. First of all, now, what's the difference between being an entrepreneur and a startup? Is there any kind of difference? And second thing, if suppose somebody has an idea to start a business or with some innovations, how should he approach? How should he go about it? If in case somebody is watching you right now, how should he go about it? There is very simple mechanism. The government has already set up a different on MyGov website. You would find a web page which has application format, and application is extremely simple. It's just 1-page application, and you can enroll yourself. There are 5 different requisites that are there. If you match them, then definitely you qualify for getting listed. As of now, there are 248 applications which have been shortlisted since April, and they have been given the status of startup. So for anyone who is willing to get enrolled on the website, may go on MyGov. It is also available on the Ministry of Industries website, so one can go there.
On your first question of what is the difference between an entrepreneur and startup, the distinction is only in terms of the mechanisms that are supporting. As I said, an entrepreneur may work on his own, may start a company on his own, but in this scheme, government has provided multiple level support mechanisms to bring in technology-related, innovation-related support from the government. So an entrepreneur is eligible to get the benefits which you were talking about, the 3-stage benefits. Will he be getting these kind of benefits if he's an entrepreneur? Definitely. If you are enrolled after 1st April 2016, then you are eligible to get those benefits. तो अगर आप पहले से एंटरप्रेन्योर हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कंसेशंस एक तरह से घोषणा की गई है उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा, एनरोल करना होगा। एक सवाल लेने की कोशिश करते हैं और ट्विटर के ज़रिए सुरेश जी का सवाल है, आइए देखते हैं कि क्या सवाल है उनका। Who is eligible to establish a startup and what are the tax incentives? सुरेश रामास्वामी ये आपसे जानना चाहते हैं। Who is eligible to establish a startup? Definitely, as I said, there are 3 conditions which are important for an entrepreneur to get qualified for this. Number 1, as I said, you should have registered after 1st April 2016, then you're eligible for it. Second, and I think which is extremely important, and in the 5 point format that I mentioned, MSME website talks about it, is in terms of your ability to come up with an idea which is able to get adequate funding. So that you can get. On the tax incentives, definitely the government has put a bit of mechanism there. In a block year of 5, you can get incentives for 3 years. Okay, yes. It is up to you to choose which one you would prefer, as most of the people do avoid first 2 years because earnings are not that great and you want to avail it in the rest of the 3. So it's entirely up to you. But fortunately, in this scheme, there is a cap. So beyond 5, you cannot go. Like, for instance, we saw the whole IT industry booming and still enjoying tax incentives. So this time government has put a cap to it. In a block of 5 years, you can take it for 3 years. All right, let's also try to take some emails as of now. We have first email from Shivraj. Now he says that what is the difference between an angel investors and venture capitalists? So Shivraj is basically asking this question as to what is the difference between angel investor and venture capitalist. So if somebody is an idea looking for finance, what are these differences as far as the angel investor or the venture capitalist is concerned? First, let me mention here that they are not part of the architecture that government has thought of as part of the startup. So it's beyond the startup framework. That's point number 1. Point number 2 is in terms of angel investors and venture capitalists. The distinction between the two, it's very simple. The distinction is in terms of the intent of investment. An intent of investment in terms of linking up an idea to take it up to the marketing stage is what an angel investor would do. So in the initial stage, the investment that you are getting is coming from the angel investor. But after the product is in the market and you still need expansion, then the venture capitalist may step in. Venture capitalists may also step in the first point itself, but angel investors would not go. Angel investors are the initial angels for you who would take the product Sachin, forward. you're also dealing with the startups and the research and everything. I just want to understand, what do financiers or venture capitalists or the angel investors look in a startup? What makes them invest in any kind of new startup? Are there any specific things they look for in a startup? Two things are very obvious that I feel. Number 1 definitely is the viability proposition of the idea. And there I think people have, like for instance, if you pick up the portfolio that Tatas have invested in, particularly Ratan Tata's personal investments that you see, you find growing a sort of incentivization of ideas like different apps in which he has invested. So apps for calling cabs, apps for hospital, medical, etc. So ideas that are possibly going to have viability life and long shelf life value
they are the ones which get So this huge startup is attraction. all about mobile apps, or is there something else also? It's also about very substantive ones, like for instance, the 248 cases that are there on the list of startups. Yes. You would find more than 100 are in the manufacturing sector. Okay. And out of them, 20 are in advanced manufacturing, which very few in India they are doing. So that way, do not forget that startup is linked with the larger idea of the Prime Minister to have Make in India. So startup is in a way supporting not just the service-led sector but manufacturing-led sector, and that the idea is of job creation. So job creation with larger spillovers, that's the criteria with which this 10,000 crore fund would work. So you would get investors' money largely because you would get support from the government in terms of viability of the proposition, number of jobs that it would create, and of course the market value of the product. तो ये जो फंड्स ऑफ फंड है 10,000 करोड़ रुपए का, वो सरकार ने कोई मैकेनिज्म है किस तरह से इन्वेस्ट करेगी, किस तरह से खर्च करेगी, क्या उसके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी है अगर कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहता है? जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि ये 5 साल में खर्च किया जाएगा फंड, प्रतिवर्ष हम 2,500 के करीब रखेंगे, 2,500 करोड़ के करीब रखेंगे रुपया, और उसमें उन्होंने 3 या 4 कंडीशंस बताई हैं जिसका हमने जिक्र किया कि किस स्टेज पर स्टार्टअप को ये फंड दिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट क्या इक्विटी लेगी, किस तरह से? उसमें उन्होंने 4 मैकेनिज्म रखे हैं। उसमें इक्विटी है, क्वासाई इक्विटी है, सॉफ्ट लोन है, और उसके साथ में रिस्क कैपिटल है। तो इन चारों फॉर्म में सरकार इन्वेस्ट मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर चूज कर सकता है कि एंटरप्रेन्योर चूज भी कर सकता है, और वो प्रपोजल की रिलेवेंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई सिर्फ मोबाइल ऐप्स लेकर के आया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, तो किस तरह के उनके पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए सरकार इस पे इन्वेस्ट कर सकती है। Well, Ajay, let's take some of the emails as well which we have received so far. I mean, we'll try to take as much as emails we can take. Now, next email we have of, let's take a look as to what is the incubation center and accelerator in startup. And आपकी स्क्रीन पे आ गया, फैजल अहमद जानना चाहता है कि मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, इससे जुड़ी जानकारियाँ कहाँ मिलेंगी? बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे मॉर्निंग और इकोनॉमी टुडे as well because right now we're discussing that part only. नहीं, बिल्कुल ठीक है फैजल साहब का सवाल। जैसा हमने शुरू में कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट देख सकते हैं, mygov.in, उस पर आपको स्टार्टअप के बारे में जानकारी मिल सकती है। All right, now also, I mean, as I was talking earlier, what sort of help these incubators and accelerators provide to a startup? And can anybody enroll in these incubators if suppose somebody is an idea to start a business? How can these incubators help these new startups or young minds in order to develop their business? Incubation basically, if you see, is a sort of oven before you finalize your food. So before you have completely cooked up the idea and you are ready to get into the market, incubation gives you a sort of sounding board to test what exactly kind of technology you have. So incubator helps you in terms of bringing in... Are these incubation center government backed or are they private entities? The 31 incubation centers which Government of India has established are largely led by the government, but you would also find more and more private sector led incubation centers coming up now, but largely as of now they are government and government agencies led incubation centers. So is the incubation center the first step to start your startup, to groom your idea over there? Not really. That's, I would say, a third or fourth step in a 6-stage commercialization. So it's just before commercialization. You can take the idea there, but you can also work with incubation centers right from stage 2, which most of the firms do. So you exactly know at the 5th stage which incubation center you would like to go for, and incubation centers also have a focus. So like for instance in ICRISAT in Hyderabad, you would find more of the incubation centers which are working on the seed sector. So supporting companies which are into agriculture sector.
In Nasik, you would find more of the manufacturing sector related firms going to Nasik's incubation center. Nasik, Pune, that belt, you would find more incubation centers on manufacturing, auto components and things like that. In other places where machine tools have come up, have now also turned into incubation centers. So you would find incubation centers playing an extremely important role in bringing finesse to the product. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ पर हमारे साथ रिपोर्ट भी साझा करेंगे आपके साथ, और कुछ सवाल भी हैं जो जीमेल के जरिए आए हैं, उनको भी लेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम बिजनेस मॉर्निंग। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है इकोनॉमी टुडे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया की। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक ऐसा ही वाकया हुआ है गुजरात के सूरत में। जानकर आपको ज़रूर हैरानी होगी कि एक कार जो कि केवल पानी से चलाई जा सकती है, और कार 1 लीटर में 75 किलोमीटर का सफ़र भी तय करती है। सूरत में पानी से चलने वाली इस कार बनाने वाले का जो सपना है वो भारत का एक बेहतरीन और सफल स्टार्टअप कंपनी शुरू करने का है, और वो चाहते हैं कि सरकार भी उनकी मदद करे। कार पानी से भी चले, ये सपना है। सपना सच हो, लोग विश्वास करें, ऐसा ही कुछ इरादा पुरुषोत्तम पिपलिया का है। सूरत में रहने वाले पिपलिया का सपना था कि उनकी कार पानी से दौड़े, और इस सपने को वो सच करने पर आमादा थे। तकनीक, हिम्मत और सपने को ताल में लाते लाते दशक बीत गया। सपना टूटा नहीं, वो हकीकत बन अब फराटे के साथ दौड़ रहा है। सूरत शहर के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने चमत्कार कर दिखाया है। हमें विश्वास नहीं होगा, पर इन्होंने उस तरह का इंजन बनाया है जो पेट्रोल के बजाय पानी से चल रहा है। सूरत का जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनका नाम पुरुषोत्तम भाई है। उन्होंने किस तरह 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस इंजन को बनाया है, इनको किस तरह से वो इंजन काम करता है, हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर पुरुषोत्तम भाई से। पेट्रोल की गाड़ी के लिए उसको पानी से सोचा, पानी से कैसे चले, तो वो उसके हाइड्रोजन, पानी में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन कन्वर्जन करने के लिए 10-15 साल उसमें मॉडिफिकेशन करने में लगा। आखिर मेहनत रंग लाई। पुरुषोत्तम की कार अब तक 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। दरअसल पुरुषोत्तम ने पानी को हाइड्रोजन फ्यूल में तब्दील किया और 2 स्ट्रोक इंजन को 4 स्ट्रोक में बदला। पिस्टन और सिलेंडर को भी मॉडिफाई किया, और अब ये नया आविष्कार तकनीकी तौर पर पेटेंट भी हो चुका है। इमिशन पॉइंट में बहुत बेस्ट इमिशन है, जो वो पूरा 100% इंडिया गवर्नमेंट हेल्प मिलेगा तो पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ पानी से कन्वर्जन में हो जाएगा, तो इमिशन विश्व में फर्स्ट कंट्री आएगा इमिशन बेस्ट में। पुरुषोत्तम भाई का ये आविष्कार ईंधन की खपत कम कर सकता है, वहीं प्रदूषण से भी लोगों को बचा सकता है। दरअसल इसी तरह के सपने और आविष्कारों को नए पंख देने और इन्हें उड़ान देना ही स्टार्टअप इंडिया का मकसद है। एजाज शेख, सूरत। सर, आपने ये स्टोरी देखी, और ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास केवल टेक्नोलॉजी है
और उनके पास कुछ नहीं है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी केवल टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए। ऐसे में उनको दो तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, कोई कंपनी उन्हें सपोर्ट करे, हायर करे और उनसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, दूसरा सरकार उन्हें सपोर्ट करे और वो खुद अपने आप में बड़े बन पाएँ। शायद स्टार्टअप का यही मकसद है। कैसे इनको इस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उसकी बौद्धिक संपदा है, उसके बारे में सरकार ने प्रयास करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम, क्योंकि कई दफ़ा ये देखा गया कि जो छोटे इनोवेशन इस तरह के जिस लेवल पे होते हैं, बिना कॉस्ट बड़ी लगाए हुए जो इनोवेशन होते हैं, वो कंपनी की चार दीवारी में बंद नहीं होते हैं, वो किसी भी समय कोई बड़ी कंपनी उसको ले सकती है। तो सरकार ने इस बारे में अटल इनोवेशन मैकेनिज्म के साथ में दूसरा जो काम शुरू किया है वो पेटेंट्स के थ्रू आपको सहायता करने का है। उसमें दो कदम उठाए गए हैं। पहला, जो फ़ी पेटेंट के ऊपर लगती है उसमें आपको रिबेट मिलेगा, 80% का रिबेट मिलेगा। और दूसरा जो है वो सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि क्या आपका एरिया उसका कवरेज होगा जो पेटेंट एप्लीकेशन है। तो जैसा आप जानते हैं कि देश को 5 भागों में बांटा गया है पेटेंट एप्लीकेशंस के लिए। आप एक जगह रजिस्टर करिए तो आप पूरे देश में रजिस्टर होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी विश्व के दूसरे देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सरकार ने अगर आपको बाहर अप्लाई करना है पेटेंट के लिए, उसमें भी आपको फी में रिबेट देने की पेशकश की है। तो शायद आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस का भी पेटेंट करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, और ये व्यवस्था अब स्टार्टअप के माध्यम से सरकार ने सामने रखी है। तो उनका अगर ये पेटेंट क्वालिफाई होता है तो उसको जो फी लगेगी उसमें तो सरकार ने रिबेट देने की पेशकश की ही है, लेकिन अगर वो पेटेंट बाहर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक नई शर्त लगाई गई हैं, 2 या 3 शर्तें हैं उसमें। अगर पेटेंट क्वालिफाई होता है तो सरकार ने उसमें आपको पैसा की असिस्टेंस देने की भी बात की है। All right, on that note, we'll also try to take some of the emails which we have received so far. Now, our next email which says that it's about an investment. As to this viewer is not getting any investment as far as his new idea or startup is concerned. So let's take a look as to what his email is. He says that in my startup, an investor wants stake of 51%, else he is not ready to finance at the moment. Should I go ahead with this deal or wait for some time, because I am trying for investment for the past 2.5 years. So what should be the strategy of Imran? He writes to us on Gmail. So what should be his strategy? He's not able to get finance, and the finance who is ready to finance is basically financing more than, he is wanting a stake of more than 51%. What he has not spelled out is the point that we were just now discussing in terms of the intellectual content of the idea. It's not just about financing; it's also about the idea, and that's the emphasis which is there with startups. Startups, the key point is what idea you want to come up with. So with 51% of investment that his investor is insisting on, who would still own the idea, and that would decide the exit route for him, say in 3 years or 4 years. He should not lose intellectual property. And as I was telling in the previous section, government is giving you monetary assistance to get patent. Second, sometimes you might not be aware of the rigmarole that is required to apply for a patent. So patent facilitation would also be done. So even if investor is insisting for 51%, no harm in going for that. But important is to protect the idea. So first he should get the patents that are required for this venture, and he should protect that turf. Once it is done, then he can move on. Also, sir, talking about the startups only, you are involved in research, you've watched many startups across you. What's the best time to wind up the business? Because there are many startups who are not making money for 4 years, 5 years, which we have also seen in many case studies as well. They're not making money, they're not making profit, not generating profit. They've managed financing but not generating profits. What's the best time to wind up? When should you start thinking of winding up the business which is not giving you or generating revenue for yourself? Arun, that's the point I was trying to make, that you have to decide exit route. And exit route may come in 3 years, it may come in 5 years, it may not come for you. But definitely exit route should be clear when you start. So when to step out has to be clear. And that's the reason why, at least from the side of the government, as we were discussing about the income tax exemption, the 5-year block that is given, and within 3 years you can come out of it. So you would have to take a call as to when the idea is not getting adequate returns. So when the optimum returns are met and you are sure that the idea would not fly very high, time to come out and get into a new idea.
एक स्टार्टअप को लेकर के एक कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशंस का। बहुत सारे लोग वो उस वैल्यूएशन पे पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या करना चाहिए जिससे कि कम से कम अट्रैक्टिव हो पाए वैल्यूएशन, जो इन्वेस्टर चाहते हैं इन्वेस्ट कर पाएँ? शायद एक ऐसी नीति या ऐसी अप्रोच जो कि आपको पता है कि इससे पैसा जनरेट हो सकता है, इससे स्टार्टअप्स के जो कॉस्ट है वो हम मीट आउट कर सकते हैं। तो इसी के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, इसी के लिए जो रिसर्च पार्क की बात की गई है कि कई दफ़ा हमको एक आइडिया होता है, एक आभास होता है कि हाँ ये शायद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं होता है, और पैसा लगाना उसके ऊपर एक जोखिम भरा काम होता है। तो उसके सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, रिसर्च पार्क बनाया है। तो आपका आइडिया, जैसा कि हमने शुरू में कहा, कि वो एक साउंडिंग बोर्ड है आपके लिए, कि जो आप कह रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ है। जैसे हमने देखा कि कार पानी पे चल रही है। अब अगर पानी पे चलाना कार इतना आसान होता तो शायद वर्षों से वो चल रही होती, लेकिन क्या ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पानी के बारे में प्रयास किया? तो इस चीज़ की टेक्नोलॉजी से जांच करना, उसकी वायबिलिटी की जांच करना, क्या हर तरह का इंजन पानी पे चल सकता है, क्या हर तरह के इंजन में फ़र्क ढंग का पानी चाहिए होगा, क्या आवश्यकता होगी, ये टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्यूबेशन सेंटर आपको हेल्प करेगा या रिसर्च पार्क हेल्प करेगा। तो उनको अपना पार्टनर बना के एक साउंडिंग बोर्ड की तरह यूज़ करना, वो बता पाएगा कि इस जोखिम भरे काम में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और वही जैसा अरुण जी ने पहले पूछा था कि एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप में क्या फ़र्क है। एंटरप्रेन्योर का काम पूरा जोखिम भरा हुआ काम है। उस जोखिम से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही सरकार ने स्टार्टअप का एक मैकेनिज्म खड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दर्शकों के सवाल लेने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। कल इसी वक्त हम हाजिर होंगे बिजनेस मॉर्निंग में, लेकिन कल का विषय है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, और अगर आप उससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो हैशटैग इकोनॉमी टुडे का आपको इस्तेमाल करना होगा। @DD न्यूज़ लाइव पर आप सवाल कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।